This Morning. conference will now be recorded. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यार। लास्ट सेशन में क्या टॉपिक करा था? गुड मॉर्निंग दीपक भाई, गुड मॉर्निंग। jar file create ठीक है, static keyword, Are static files you keyword. using Maven? और and वो करा था final keyword not static. सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल गिटअप कर लिया या नहीं करा? अभी GitHub कर लिया सो कर लिया ना। चलो आज करेंगे फिर हम लूप्स एंड कंडीशंस। Static भी रहता था हमारे पास। स्टैटिक भी रहता भी, और इसके अलावा फिर एब्स्ट्रैक्शन भी रहता। चलो ये छोटे टॉपिक कर लेते हैं आज। और इसके अलावा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स करा या नहीं करा? नहीं किया सर। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये करते हैं पहले। हाँ जी, स्टैटिक कीवर्ड। In case of static keyword, memory will be allocated at class level instead of object level. memory कहाँ मिलेगी? Class. class level पे, right? चलो, let me show some example. For example, I'm going to create a new class. Right, I have created a new class here. For example, here we have a variable. Which type of variable is this? Global variable. Global variable. For example, we have a method, method1. Can I use this variable inside this method? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Yes. Because it is which type of variable? Global. What is the Global scope variable. of global variable? Can be used for the class. Throughout the Right, whole class. So here in this method, what I'm doing? What I'm doing? Incrementing the value of incrementing a, right? A. So here I have created one object. Anshul bhai mute कर लेना। हाँ जी, here we have created a object of the class. हाँ जी, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने यहाँ पे? क्लास ए का, राइट? हमने कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया? Class A. राइट? हाँ जी, कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने? क्लास ए का। अब here we have calling which method? method one. Method 1. And what this method is doing? Incrementing the value of A by 1. Right? Incrementing the value of global keyword. Global variable. global variable.
हाँ जी, किसी का कोई डाउट? तो a की व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? 1. हाँ जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? 1. 1. What is the default 1. value of global variable? 0. 0. Default value of global variable is 0, right? And the So global here, integer value, right? Integer हाँ value, जी, global बिल्कुल integer सही value. कह रहे हैं, हाँ, ये लिखेंगे बिल्कुल सही। तो कब ज्वाइनिंग है भाई? हाँ जी, अंशुल कब ज्वाइनिंग है? नहीं, अभी फाइनल डिसीजन ले नहीं पा रहा हूँ क्या, अभी फिर समझ कंफ्यूज हो नहीं रहे आ हो, रहा क्या करूँ। कंफ्यूज हो रहे ट्राई कर रहा हूँ कि सही, मतलब चलो सही डिसीजन, बट क्या क्या कह सकते हैं। हाँ, अभी एक क्विक ये भी क्वेश्चन था दीपक, सॉरी सॉरी टू इंटरफेयर। कितना मतलब सिलेबस हो गया इस बैच का? क्या जावा बेसिक क्या में पे कुछ, जोर मार के 5-6 सेशन होंगे, 6 सेशन होंगे। तो अभी ये मोबाइल बेसिक में, टेस्टिंग पे अभी मोबाइल तक नहीं बाद में, पहुंचे है ना? मोबाइल पे तो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अभी जावा आप लोगों की इनके साथ चलेगी, सेलेनियम वालों के साथ, और फिर मोबाइल वाला पार्ट अलग करेंगे, ऑलराइट, ठीक है। राइट? हाँ जी, हियर फॉर एग्जांपल आई एम प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ a प्लस obj1.a, what will be the output? हाँ जी, what will be the output, अमित? Value of A is 1. Value of a is 1. Value of a 1 for object 1. Now for example, I'm going to create another object. Second object, I'm calling the method 1. Value of a plus obj2.a. What will be the output? 1. 2. हाँ जी, what will be the output? 1 1, because each object having its own memory. हर ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्या होती है? अलग अलग होती है, राइट? ईच ऑब्जेक्ट हैविंग इट्स ओन मेमोरी. So what is the output, Kunal? What is the output 1 for both objects. for second object? Yes, 1. 1 and 1. 1. Now let's suppose I'm going to create another object. What will be the output? 1. 1 1 1. 1 1 1. Now you can see, right? Because after incrementing, where is the value storing? Because after increment value, it is storing the value in its own memory, right? Now for example, I'm making this variable as a static variable. Memory will be allocated where? Class level instead of object level. कहां मिलेगी मेमोरी? बताओ। Class level. Class level. जो, हाँ जी, जो आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका पहला ऑब्जेक्ट होगा
what it will do? First object will change the value from 0 to 1. 1. 0 to 1. Second object, what it will do? 1 to 2. 1 to 2. Good one. This same Third memory object, use होगी. third object 2 से 3. 2 to 3. 2 to 3. Right? For object 1, what is the value we are getting? For object 1, what is the output? 1. Second object, 2. third object, 3. 3. Clear to everyone? Yes. Now, the main benefit of making the static is that we can call directly using class name, right? That is the main benefit, right? For example, we have a, which type of method is this? Static method. Static method. Right? Now, what is the benefit of static keyword? What is the main benefit? It can be We called can to call it class name. directly. We don't have to create objects. We can directly call it. Hanji, Sir, it is at the class level, so we cannot call it from an object. We need to yes, class call it from. we can call the static method or variable using reference variable plus and class name. But what is the better approach? Calling to Yes, class name. static one. Using class name. Right? We are able to call, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Hanji, Deepak, one question. For a method, if I'm making it static or like the one non-static, what is the difference? I mean, okay, the one difference is like I can call it directly with class, but other than that, what actually? How is the in case of static, memory will be allocated at class level. That is the first benefit, memory utilization. Second, we can call directly using class name. I will tell real-time example, like from automation point of view, I will discuss. Right? if the method is not static, how for a method how will be the memory allocation? Again, if we are not creating, not making the method as a static, memory will be allocated at object level, right? And can we call the static variable as well directly class name? Yes, we are able to call. Yes. Any doubt? Any doubt? Anyone? Right?
let me take some example, Mira. Let me take example. Okay. For example, we have a class. We have different other classes as well. In this class, what we are doing, the class name is browser handle. Here we have created a method registration, that is non-static method. How you can call this method? We need this method at 10 places. We need this method at 10 places. What is the limitation? We need to call them using different objects with the corresponding different Yes, class. we We have have to to create 10 call. objects. 10 Yes, objects will be we have to. created. Yes, we have to And then Memory. create we need to call 10 also. objects in the 10 classes where we need to call this method. That is a limitation. Yes or no? Yes. Yes, sir. If you are making it static, what is the benefit? We can Only directly call one it class name. one-time memory allocation. Yes. एक मिनट रुकना यार. एक मिनट रुकना. यार यही तो दिक्कत है. हाँ जी. Mira, this example is clear. Yes, yes, this is okay. Clear. When something is common, we can say when something is common between objects, we Like will you mean make. Yeah, something that will not be changed or something exactly, common. something not changed, and then we can yeah, then we need to use it at different places, then we can use static. Okay. Yes, we will make that thing as a static. For example, यार ऐसे तो. हाँ. For example, here we have 29 peoples in the session now. We can say student is a class and there are 29 objects we have created for student class, right? For example, Deepak Sharma is a object of class student. Divya Koshik is a object of class student. Himanshu Jairat is a object of class student, right? Mira is a object of class student, right? Every student, every object having common trainer name. Trainer name is Deepak. So what you will do? You will make trainer name as a static. Class timing, that is static, common for all the objects, or we can say students. Any doubt, anyone? Any doubt here? Mira? Okay, okay, clear. हाँ जी.
एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो। सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। कुणाल भाई क्लियर ना? हाँ जी क्लियर। A static method can use the static variable. A static method can't use the non-static variable. Let me show. Here we have a, which type of method is this? Static method. Static method. हाँ जी, can I use this variable inside this method? Can I use? Yes or no? Yes, sir. Because it is a which type of variable? Static. Static variable. Can I use non-static variable inside static method? No, sir. No, it is not allowing. Deepak, can we use this A inside main static main method? Yes. And no. Again, it's non-static. Now you can use using object. All right. Direct call is not possible. Okay. A static method can use the which variable? Static variable. A static method can't use the non-static variable directly. Right? A non-static method can use the both. Let me show. Which type of variable is this? Static variable. Can I use this static variable here, Anshul? Yes, it is allowing. Yes. Right? Mm. A non-static method can use the Static variables. a non-static method can use the Static variable. both. Static and non. Right? Static plus non-static. No static. Right? Any doubt here? Guys, please give confirmation in the chat box. Yes, sir. Clear. क्या करो सर? डज लेस मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कॉलिंग स्टैटिक? हाँ, मेमोरी सेव होती है ना भाई, आपकी मेमोरी सेव होती है. Command line arguments. We can give inputs to the class using. We can give input to the class using. कैसे देते थे input? class को अगर देनी है. Scanner class. General class. There is another approach by which we can pass the inputs to the class using Command line. command line arguments. अभी बताता हूँ. ये देखो, here we have written main, and after that in this main method, what is this? Command line arguments. For example, I want to pass the browser name and the URL using command line arguments. How I can give? This is our class. Right click on the class, run as, and run configuration. Here we have the which option?
Arguments. Arguments. Here you can give Chrome. Second, www.youtube.com. How many inputs we have given? 2. Now, where those inputs will go? Where that input will go? Arcs. Argument. Asks. You can give my name here. It's not a problem. Right? You can check total arguments plus Deepak dot length. How many arguments are coming? How many arguments are coming? 2. 2. You can print first argument. Deepak square bracket 0. Second argument. हाँ जी, कोई डाउट? सर ये ये जो मतलब आपने मेन के उसमें ये मेन के उसमें जाएंगे हमेशा जो वहां से आर्गुमेंट्स हाँ डालेंगे। हाँ 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 हाँ। दिस इज और अगर हमें इसको यूज करना है फर्दर यूज करना है तो जैसे फॉर कर एग्जांपल सकते हो, हमने कर सकते ऑप्शन दे दिए क्रोम यूज करना है या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना है। हाँ पार्टिसिपेंट जो यूजर है वो इनपुट है और उसके बाद हाँ मैं भी अभी उसके बताता बेसिस हूँ. पे टेस्टिंग हो। हाँ. So what is the meaning of this line? Array of string means multiple strings, right? So here Deepak is a variable. Deepak is a variable. We are printing 0th element of Deepak. First element of Deepak. Firstly, we are checking the bolo And लेंथ Length. length. लेंथ। You can लेंथ कैसे आएगी? हमने तो बस एक डिफाइन किया है कि स्ट्रिंग ये कह रहे हैं. space के basis पे it will first argument space second argument space दीपक यहाँ पे third argument. कोई और डेलीमीटर भी यूज कर सकते हैं या ओनली नहीं स्पेस कैन नहीं 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 नहीं. Here it will use space as a delimiter. Means it will break the arguments based upon the space. You can do one thing, right click on the class A, run configuration argument. It's up to you what you want to give. My name is Deepak Channa. How many arguments will be there? 5. 5. 5. 5. You can print. सर ये स्ट्रिंग के साथ इंटीजर से भी हैंडलिंग हो सकती है कि हाँ नहीं जी, हाँ होती जी, है? हाँ जी. दे सकते हो. राइट क्लिक ऑन द क्लास, run configuration. My name is Deepak Channa. Welcome to all of you. 1 2 3 4 5. Clear? Yes. यस सर. तो सर You ये want to इंटीजर को एज ए string? स्ट्रिंग String, yes, ठीक है yes, yes. ठीक है ठीक है. Let's suppose you want to print all the. अभी लूप का कंसेप्ट आएगा, आगे वो पढ़ेंगे, उसमें करेंगे. Any doubt? Any doubt? प्रिंट कर रहा है ना, मेरा डाउट है वो भी आंसर नहीं हुआ. जैसे अभी हमने आर्गुमेंट से प्रिंट कराया है लेकिन यही आर्गुमेंट्स अगर हम यूजर को देते हैं और उसको चूज करना होता इनमें से, हाउ कैन वी डू दैट? नहीं, देखो आप क्या कर सकते हो. Here
we are not giving the option. Here we are not giving the options for inputs. Here user will give the input as per his requirement, his or her requirement. Code will work accordingly. For example, you are giving the browser name. So if Deepak square bracket 0 dot equals Chrome, then code will execute where? क्रोम का कोड लिख देंगे यहाँ पे। तो ऐसे चलेगा आपका कोड। अभी के लिए छोड़ दो इसको, बट चलेगा ऐसे। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। सब लोग एक बार अपडेट करो प्लीज। Deepak, when you gave like 1, 2, 3, 4, 5, that will be treated as a string only, right? Here? Yes, string only, string only. Okay. And Deepak, we can also overload this static main method as well, right? We can create. अभी आऊंगा। सब लोग एक बार अपडेट करो। There is a interview question. Can we overload the main method? What is the rule of overloading? बताओ, method overloading. Same name, same output type, but Method different argument same. input parameters will be different. Method name same. Different argument, Same same input name data and type, same same return. output data type, Will be different. different. Yeah. Yes. Output argument May or may not be same. right? It will always happen where? Input parameter different Within. same class. Can we overload the main method? Yes, we can. This is main method, right? Here I'm going to create one more main method, but that is which type of method? Arguments. Default method. Right? No. Can I call this main method from our this is standard main method. This is standard main method. Who has defined this standard main method? Java. So Deepak, the execution will be only in that standard Sorry? main method, right? Execution, I Yes, mean the this code standard. execution will be only from the Yes, standard. this standard. एक मिनट रुकना सब लोग, एक मिनट रुकना। हाँ जी, क्लियर है सबको? एक मिनट रुकना सब लोग प्लीज।
Hanji. So this is the standard main method. This is the standard main method. If you are doing some change here, for example, I'm removing the arguments. तो ये नहीं चलेगा. It will not work. You can run. What it is saying? What it is saying? Kunal? Main method not found in class. Please define the. Please define main method as public static void main string ask. Or Java FX application must extend Java FX application. Three second option क्या है? Second option which one? और Java FX application class must extend नहीं Java. इसको छोड़ दो. इसको छोड़ दो. ठीक है. Now if you are keeping the main standard method, that will work. Can I call this user defined main method from our main method? Yes sir. Class name dot Java किसको समझेगा? Java will understand which main as a static, as a standard. Standard main method. Yes. Java defined main method. Yes. Clear सबको? Yes sir. We are able to overload the main method. Yes. We can overload the main method. Yes. We can overload the constructor. Yes or not? Yes sir. Yes. Yes, we can. How? For example, we have created. This is our first constructor. This is our second constructor. This is our what are the rules of overloading? What are the rules of overloading? After the name same. Name same. Input name. Inputs different. Output can be or cannot be. So we can overload. So we can overload the constructor. Yes. Right. We can override the constructor. Override. Yes sir. We can't. Okay. देखो. Why? For example, we have a class. एक मिनट रुकना सब लोग प्लीज. एक मिनट देना. We can override the constructor? No, we can't. Let me show example. For example, we have a class. We have a class 1. What will be the name of the constructor here? What will be the name of the constructor? Class 1. Let's suppose we have created another class that is extending the class 1. Here we have created a constructor. So both the constructor are same. Both the constructor are same. Yes or no? Yes. Yes sir. Why? No, both are different. Na? No, Name that is is same. Java. Structure Different class. same. Yes.
This is class 1, constructor name is class 1. Here, what is the name of the constructor? Right. Class 2. What are the rule of overriding? Same method name should be same. Argument, input, everything should be same. Right. Here, Anji, constructor clear? not different. Yes, sir. सब लोग एक बार अपडेट करो, एक बार सब लोग अपडेट करो प्लीज। नहीं क्लास 1 लास्ट में क्लास 1 भी तो लिख सकते थे ना, क्योंकि अपने एक्सटेंड नहीं भाई, कीवर्ड आप जब यूज करा बात बताओ, तो क्लास 2 के अंदर आप क्लास 1 के नाम से कंस्ट्रक्टर बना, हियर वी कैन क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर बाय दिस वे, इज इट पॉसिबल? नो, व्हाट इज द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टर? Name of the No constructor duplicate. and the class. No, listen. Here my constructor name can be with the name class 2 only, we can't na class 1, class 1 के नाम से नहीं बना सकते, बट क्लास right? 1 जो मेथड है वो ऊपर यूज हो रहा है ना, Not ऊपर वाली method, क्लास that में। is a जब constructor, हमने that is a constructor, अच्छा मेथड not a method, it's a ओके constructor. से कंफ्यूज हो रहे हैं मेथड और कंस्ट्रक्टर को लेकर, हाँ कंफ्यूजन हो रही है। कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम विल बी सेम, so here our constructor name is class 1, that is a constructor, not method. मेथड होता तो मेथड यूज कर सकते थे ना। हाँ, we can override the method. ठीक Here question was, can we override the constructor? No, we can't. So here I'm taking, that's why constructor. ओके गॉट इट। Deepak, we can call the constructor of parent class in Yes, child class. implicit It is possible, right? implicit We can call and call. explicit call. Yes, implicit call and explicit. If you want to call the parameterized constructor, then you will use the super keyword. If you are not writing the super keyword, it will call the parent default constructor. Default constructor. Okay. ठीक है जी, एक बार सब लोग चैट में अपडेट करो प्लीज। सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो प्लीज। Deepak, overriding can be done, but overloading it is always in the overload concept, right? Like same class name and different. Let me explain again, Meera. Let me explain No, again. this is fine. I mean, what I'm asking is like overloading. That is only for constructor. It is always satisfying the rule for overloading. Right? Always it will have the class Yes, name. yes. We can overload the constructor or method or static main method, right? Overriding, we can't override the constructor, right? We can override the method or main method, Okay. right, Meera? Yeah. Okay. Clear. Right? एक बार सब लोग अपडेट कर दो प्लीज। जो ये टॉपिक है ना, ये मैं आगे लूंगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लोग भी कम है, उसी की वजह से, नवरात्रों की वजह से। तो जो ये वाला टॉपिक है ना, एब्स्ट्रैक्शन, ये आगे ले लेंगे। एक मिनट रुको। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स, ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। Here we have created a method, method 1. Which type of input this method expecting, Meera? Integer. Integer. So here, while calling, I'm passing which value? Which value? इंटीजर वैल्यू। Now, which type of value we can pass? No, we can't pass anything. Default method. Make sense? यस मेक सेंस। Right?
there is another concept, that is there is a concept named optional arguments. Means it's up to us whether we want to give the inputs or not, with the help of hello, Optional Optional argument. argument. how we declare the optional arguments, how we declare the optional arguments. Here string, 3 dot and variable name, for example abc. So we are passing any value here, yes or no? Right, let's suppose I want to pass the value. I'm able to pass the value, yes or no? yes or no? कितनी वैल्यू थी यहाँ पे? Two values. Yes, Two, two two values. यहाँ पे 0. No value. 2 values. Let's suppose I want to pass 3 values. Right, how many arguments we are giving? 4. So here you can check, if abc dot length double equal 0, then how it will work? Working as a default, else working as a parameterized. एक मिनट देना, working as a default. So how many time it will work as a default, 1. and how many time it will work as a parameterize? Two times. Two. You can see working as a default, and 2 time it is working as a Parameterized. parameterize. If I want to give, हाँ हाँ Sorry, next में integer आ रहा था, डाल के तो हाँ 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 हाँ, it will not allow. As of now it will not allow, because here what we have written, Kunal, here string type. if I'm writing integer, then which type of value It we will can only accept pass? integer. Integer only. Now in this case what is happening, it is not expecting, it can't take which type of value? Integer. String value. String value it Cannot can't take. accept string value. Yes. Right. If I want to pass the both, then what I will write here? Object. Object is the parent class of all classes in Java. तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, अब कैसी वैल्यू दे सकता हूँ मैं? Any value, numerical. Any value. Clear? Sir, Size integer. automatically ले लेता होगा. जैसे string हाँ है जी, तो क्या string कह रहे हैं? size ले लेता होगा ना. Yes. For example, you want to pass the combination as well. It will work. Right? सर इंटीजर का एक्सप्लिसिटली है ही नहीं ऑप्शनल में, जैसे स्ट्रिंग का है, या ऑब्जेक्ट तो हम दे ही सकते हैं, सुपर मतलब ऑल क्लासेस का ये है मेन क्लास, हम इंटीजर नहीं दे सकते क्या एक्सप्लिसिटली इसमें? दे सकते हैं भाई, आप इंटीजर लिख दो यहाँ पे बस. In अच्छा, this और case साथ में it will take only integer. It can take only integer. ओके It ओके can't take string value. Right? ओके If you want to pass, अच्छा एक बात समझो, if you want to pass string value, then you can write there string 3 dot then variable name. If you want to pass Okay. only integer, then you can write integer 3 dot and variable name. If Okay, you sir. want to pass the combination, then ऑब्जेक्ट object 3 dot and Variable. variable name. ठीक है सर, Right? थैंक यू. एक बार सब लोग चैट में अपडेट कर दो प्लीज.
दीपक, ये 3 डॉट्स को एलिप्सिस बोलते हैं ना, शायद ऐसा कुछ वर्ड होता है हाँ जी, हाँ एलिप्सिस। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सब लोग एक बार अपडेट कर दो प्लीज। तो आज क्या प्रैक्टिस करनी है? स्टैटिक कीवर्ड की और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। बस ये 3 टॉपिक करो। लोग थोड़ा सा कम लग रहे हैं मेरे को आज। कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। टुमारो वी हैव इंपॉर्टेंट सेशन दैट विल बी ऑन लूप्स एंड कंडीशन। काफी इंपॉर्टेंट अच्छा सेशन रहेगा कल का आपका। सेक्शन फिर बाद में करेंगे। एफ सेक्शन बाद में करेंगे। ये कल इसलिए पिक करा लूप्स एंड कंडीशन क्योंकि इसके ऊपर ना 8 से 10 असाइनमेंट होंगे, 8 से 10। तो आप लोगों के पास पूरा वीक रहेगा प्रैक्टिस के लिए। हाँ जी, सब लोग एक बार चैट में अपडेट करो अब तक क्लियर है अगर। ठीक है। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन था अनु? ये जो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जो रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स हम मेथड में पास करते हैं उससे कैसे डिफरेंट है? सेम है वो। देखो आप कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, देयर कैन बी ए सिचुएशन वेयर यू वांट टू पास द वैल्यू और यू डोंट वांट टू पास द वैल्यू। कैसे करोगे इस केस को? हो जाती है ऐसी सिचुएशन, वी कैन डू यूजिंग कुणाल कैसे कर सकते हैं? ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स। नॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आपका डिफरेंस ये, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट में इफ यू हैव रिटर्न देन यू हैव टू पास द वैल्यू। ऐसा नहीं है ना कि आप बिना वैल्यू पास करे आप काम कर लोगे, नहीं कर पाओगे। एज आई हैव शोन फॉर एग्जांपल, दिस इज ए मेथड, here I have written int a int b. Now while calling, what is the limitation? We have to pass two values, two integer value, otherwise it will not allow, right? But in case of optional argument, it's up to you. ऑप्शनल आर्गुमेंट का रियल टाइम एग्जांपल दोगे? मैं एक काम करूंगा, इसका डिस्कस करूंगा एक अच्छा एग्जांपल इसका भी कल के सेशन में। ऑप्शनल आर्गुमेंट का एक एग्जांपल ले लेंगे, बहुत अच्छी चीज वो करेंगे एक डिस्कस एग्जांपल। whether you want to pass the value or you don't want to pass. दीपक, एक सर एग्जांपल ये हो सकता है, लेट्स से एक्सेल से हम कुछ पिक कर रहे हैं, हम्म मतलब एक एक्सेल हम्म फाइल है, वहां से कोई कॉलम का डेटा पिक कर रहे हैं, तो उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगे वो वेरिंग लेंथ्स के हो सकते हैं, है ना? तो वहां पे ये ऑप्शनल आर्गुमेंट यूज हो सकता है फंक्शन में कॉल मैं एक करने के अच्छा बहुत बहुत सॉलिड एग्जांपल दूंगा इसका, एक बार कल लिए। डिस्कस करूंगा। ठीक है। हाँ जी सर एक कुणाल तो कुछ आप कह रहे थे? आर्गुमेंट इसमें पास भी कर रहे हो सर, एक आर्गुमेंट कमांड लाइन में देते हैं हम, बेसिकली आर्गुमेंट्स कमांड लाइन के थ्रू हम पास करेंगे नहीं या नहीं नहीं, यहीं वो पे? नहीं है। नहीं 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 मतलब वो अलग भाई, चीज है, वो अलग while चीज है। calling the method you are deciding whether you want to give the value, you are ओके ओके deciding whether we want to give the value or not. ओके ओके। ठीक है, ठीक है, तो इतना ही रखता हूं आज। कल वो पक्का ले लूंगा कुणाल भाई पहले, ओके ठीक है, थैंक्स। ठीक है ना? थैंक यू दीपक सर। नहीं रखते हैं आज। Thank you, Deepak. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो जयरथ भाई। ठीक है जी, मैं ये रिकॉर्डिंग आप लोगों की अपलोड कर दूं अभी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू ओके जी, सर। दीपक। ओके जी बाय। ओके सर, थैंक यू। ओके थैंक जी यू बाय। सर। ओके जी बाय।